Hello students, good morning. Welcome to Literature Vidya. I am Ankita. I hope you are all doing well, working hard for your upcoming UGC NET exam. So, the individual that we are going to study today is Noam Chomsky. Noam Chomsky is a very important individual from the point of the UGC NET exam. He is said to be the father of modern linguistics and also the founder of cognitive sciences. He is an American philosopher as well as a linguist, okay? And he has presented us with various concepts like the deep structure and the surface structure, the I language and the E language, the competence and the performance, the Caesarean linguistics, the concept of universal grammar, and a lot more. So in this class, we are going to understand the concepts and the ideas presented by him one by one. Okay, so let's begin with Noam Chomsky. So, first, transformational grammar or transformational generative grammar. Grammar is a set of rules that generate those combinations of words that form a grammatical sentence in a language and use those defined operations, that's called transformations, the defined operations, the grammatical, that the grammar basically that you use टू प्रोड्यूस सेंटेंस, राइट. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ग्रामर जो है वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिसकी कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम एक प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाते हैं और इन डिफाइंड ऑपरेशंस की हेल्प से ही, डिफाइंड ऑपरेशंस आर द डिफाइंड ऑपरेशंस ऑफ ग्रामर, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन. इसकी हेल्प से ही एक सेंटेंस प्रोड्यूस होता है. ओके. Then he says that all this is based on the classical works that were written by Plato and Aristotle. Okay. Now let's begin with the first concept that he has presented, that is the deep structure and the surface structure. So let's begin with an example. What is a deep structure? Here it says Maggie went to market and Alex went to market. This is the example of a deep structure. Whereas Maggie and Alex went to market is an example of a surface structure. Okay. तो ये जो है Maggie went to market and Alex went to market, it represents the core semantic relationship of a sentence, right? यहाँ पर deep structure में हमारा focus meaning of the sentence पे है. Deep structure का major focus is on the meaning production, right? It is इनवर्ड लुकिंग, इसका फोकस मीनिंग पर होता है. ओके. लाइक वी विजिट डॉक्टर, इट कैन बी न्यूसेंस. ओके. डीप सेंटेंस का पर्पस होता है मीनिंग प्रोडक्शन, राइट. इट्स मेजरली कंसर्न्ड विद द मीनिंग. ओके. वेराज जब हम सरफेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सरफेस स्ट्रक्चर एक आउटवर्ड फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस होता है जिसका फोकस ग्रामर पे होता है. उसका फोकस मीनिंग पर ना होकर कैसे एक सेंटेंस फॉर्म हुआ है, राइट, उसके आउटवर्ड स्ट्रक्चर पे, उसकी ग्रामेटिकल, उसकी ग्रामर पे, राइट, पे ज्यादा होता है. जैसे डीप और कोई भी डीप स्ट्रक्चर जो है वो सरफेस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है. अ डीप स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड टू सरफेस स्ट्रक्चर बाय ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रामर, राइट. लाइक विजिटिंग अ डॉक्टर कैन बी न्यूसेंस, आउटवर्ड फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस कंसर्न्ड विद ग्रामर, राइट. Window was broken by Charlie. So हमें क्या समझ आया है कि डीप स्ट्रक्चर जो होता है वो इनवर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है, वहां पे मेजर कंसर्न मीनिंग होता है. पर वहीं अगर सरफेस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो एक आउटवर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस होता है जिसका मेजर फोकस ग्रामर होता है. ओके. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब ये एग्जाम्पल देखो. राम ईट्स अ चेयर इन डिनर. अब ये जो एग्जाम्पल है राम ईट्स अ चेयर इन डिनर, ये ग्रामेटिकली perfectly correct, right? There's no grammatical error in it.
but it does not define any particular meaning to us. ये meaningful sentence नहीं है. Ram eats a chair in dinner. No. So this is a surface structure है, right? But it is not a correct deep structure, right? Grammar is correct. The grammar is perfectly correct here, but it is not meaningful, and hence it is not a deep structure, है ना? It is concerned with grammar. यहाँ पर क्योंकि हमारा surface structure जो है वो grammar के साथ ज़्यादा concern होता है than with the meaning. So this is a perfectly right surface structure, yeah, but it's not a deep structure, okay? अब ये जो कॉन्सेप्ट है सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर का, ये हमारे नॉम चॉम्स्की ने 1957 की बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में दिया, और बाद में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया 1965 की बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स. ओके, रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक. सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स हैव already been asked in the UGC NET exam. So remember the name of the book with the year. 1957 is the syntactic structure and 1965 is the aspects of theory of syntax. Okay, is it clear? Okay, so we move forward to the second concept presented by him. That's the innate grammar and the universal grammar. Okay, innate or the universal grammar. What does it say? It says universal grammar. It says it was put forward in Chomsky's book Chomsky Universal Grammar and Introduction. Right? ये किस बुक में प्रेजेंट किया गया था? आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर. ये प्रेजेंट किया गया था नॉम चॉम्स्की की बुक यूनिवर्सल ग्रामर एंड इंट्रोडक्शन. राइट, इट वाज पुट फॉरवर्ड इन द बुक यूनिवर्सल ग्रामर एंड इंट्रोडक्शन. ओके, रिमेंबर दिस. नॉम चॉम्स्की की बुक यूनिवर्सल ग्रामर एंड इंट्रोडक्शन में ये कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्ड किया गया था. ओके, अब ये क्या कह रहा है? व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर मीन? तो यहाँ पर नॉम चॉम्स्की ये कहना चाहता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है, तो वहीं पर ही उस जन्म के दौरान ही वो अपने ह्यूमन ब्रेन में कुछ ग्रामेटिकल स्किल्स इनेटली अपने साथ लेकर आता है. तभी तो बच्चे को कभी भी लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, या कोई वो अपनी मदर टंग या कोई भी सराउंडिंग लैंग्वेज अपने आप से ही सीख जाता है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेबिलिटीज दैट ही हैज विद इन हिम. राइट, दिस इज व्हाट इज यूनिवर्सल ग्रामर. क्या कह रहा है? एबिलिटी टू लर्न ग्रामर इज बिल्ड इनटू ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम बर्थ regardless of language, and everybody has the innate ability called language faculty. कह रहे हैं हर इंडिविजुअल के पास एक innate ability होती है called the language faculty. ये प्रेजेंट कर रहा है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर कि एक बच्चा राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ हैज द कैपेबिलिटीज टू लर्न द लैंग्वेज. तभी वो अपने सराउंडिंग्स की लैंग्वेज को इतनी आसानी से ग्रैब कर लेता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, डजंट मैटर. राइट, explains, and this is how he explains how a child acquires a language which is heard by his parents and the surroundings without learning it. Okay, and this is the explanation that he gives to his concept of universal grammar. Okay, अब ये जो concept है universal grammar का, it is a concept that is contradictory to the concept that was presented by the imperialist. Right, imperialist ने जो concept present किया था हमारे सामने, that is the concept of a tabula rasa. imperialist का मानना है कि हमारा जो human mind होता है, that's like a clean slate, that's a tabula rasa, and it is after we take birth that we learn everything and we write each and everything on that slate. Right, and it is our choice what we write on the slate. Right, वहीं उसी के contradictory में नॉम चॉम्स्की कह रहा है कि बेसिक ग्रामर स्किल्स तो हम अपने साथ राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ लेकर आते हैं. राइट, तो ये जो दो आइडियोलॉजीज हैं, जो इंपीरियलिस्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ टेब्यूला रासा है और इसकी, दीज आर टू कॉन्ट्रोडिक्टरी आइडियोलॉजीज दैट इज प्रेजेंटेड. ओके, रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीरियलिज्म एंड देयर आइडिया of a brain being a tabula rasa, that's a clean slate. Okay, then it works. Now it says it works on the set of parameters and all these set of principles. The child has the ability to understand all principles and parameters unconsciously. Okay, innate ability होती है उसके अंदर. Now every language has the same element including a head. अब ये क्या कह रहा है कि हर language में एक हेड होता है. व्हाट इज हेड? हेड इज द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. जैसे हम कह रहे हैं वर्क हार्ड, तो इसमें मेन क्या है? इट्स वर्क.
है ना। हार्ड तो उसका एडजेक्टिव है कि अच्छे से पढ़ो, राइट। यहाँ पे स्मार्ट गर्ल, उसमें मेन कौन है, गर्ल। अब हम उसको ये दे रहे हैं कि शी स्मार्ट, ठीक है। तो दिस इज द हेड ऑफ द सेंटेंस एंड ही सेइंग हर लैंग्वेज में एक हेड होता है सेंटेंस में, ओके। Okay, now let's move forward to the third concept that's presented by him, that's the E language and the I language. ठीक है, तो अब E language और I language को पढ़ते हैं। E language और I language क्या है? जो E language है